Hey guys, what's up and welcome back to more Hogwarts Legacy. So लास्ट एपिसोड में अपन कुछ साइड क्वेस्ट कंप्लीट कर रहे थे। एक हार्लो से रिलेटेड था। हार्लो बेसिकली गेम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विलन्स में से है, जो विक्टर रूकवुड है उसका राइट हैंड है, तो उनसे रिलेटेड था। एंड दूसरा वाला जो मिशन था वो पोचर्स से रिलेटेड था, जिसमें अपन को एक ड्रैगन को उसका एग वापस देना था। तो वो मिशन अपन एक्चुअली पहले किया था, अपन ने एक मिशन जिसमें एक ड्रैगन को बचाया था। लास्ट एपिसोड में जो मिशन किया उसमें अपन ने उसका एग वापस लौटाया। एनीवेज अपन एपिसोड के एंड में अपना मेन क्वेस्ट किया था, जिसमें अपन ट्रेजर रूम मैप रूम गए थे, सॉरी मैप रूम गए थे। वहाँ पे जो प्रोफेसर का पोर्ट्रेल था, थर्ड प्रोफेसर, उससे बात की थी। तो उसने बताया कि जो थर्ड वाला ट्रायल है वो हेडमास्टर ब्लैक, यानी कि जो अभी हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर है, उसके रूम के अंदर से होके हो जाता है। अब वहाँ पे कैसे घुसना है इसके लिए अपन को प्रोफेसर फिग से बात करना है। तो अपना अगला मेन मिशन जो है वो प्रोफेसर फिग से बात करने वाला है। बट उसके अलावा पॉपी का एक और मिशन आ गया, जिसमें तुम्हें याद होगा कि ये ड्रैगन एग का मिशन जो अपने लास्ट एपिसोड में किया था, उसके बाद पॉपी को लगा कि उसकी ग्रैंडमा उसे लेटर वगैरह नहीं भेज रही है, कुछ टाइम हो गया, आउल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आई गेस वही मिशन कंटिन्यू होने वाला है। ये पहले अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली जब भी अपन एक ट्रायल कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे अभी विंटर चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर चालू हो जाता है, तुम ऐसा बोल सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये ऐसे जो मिशन है जिसमें से डायलॉग बॉक्स बनते हैं, ये मुझे लग रहा है अगर तुमने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं किया तो ये चले जाएंगे शायद। इसलिए मैं चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए ये पहले अपन करते हैं, उसके बाद मेन मिशन करेंगे। Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. स्नेजेट, आई डोंट थिंक वी हैव अ स्नेजेट इन आवर विवीरियम। अपने रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में स्नेजेट नहीं है क्या स्नेजेट? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. या अपन ने एक क्विज खेला था कुछ एपिसोड पहले एक आधे मिशन में, जिसमें अपन को पता चला कि गोल्डन ये जो भी चीज़ है जो अपन क्विडिच में यूज़ करते हैं, गोल्डन स्निच, उससे पहले स्निचेट नाम का बर्ड यूज़ किया जाता था। I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. ओह, ये मिशन छोटा सा था। आई गेस वी आर बैक ऑन आवर ट्रायल मिशन, जो थर्ड ट्रायल है वो वाला। वैसे सेंचर्स से अपन एक बार मिले थे ब्रीफली, जब अपन वो ड्रैगन को बचाने वाला मिशन स्टार्ट किया था। इट विल बी नाइस टू हैव अ सेंचर साइड मिशन ना। ये सेंचर्स हैरी पॉटर मूवीज में भी थे। एनीवेज, प्रोफेसर फिग किधर गया? प्रोफेसर फिग से जाके बात करते हैं। मुझे लग रहा है प्रॉबेबली रात में ही घुसने को बोलेगा हेडमास्टर के रूम में। रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा तो अपन को वही स्टेल्थली घुसना पड़ेगा। मिशन ट्रैक नहीं है क्या?
वो यहाँ पे एक डेमी गाइस है, देखा तुमने? वो मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, वो रहा। Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. Oh, A Polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. ये पोशन मूवी में था, तुम्हें याद होगा हैरी और रॉन ड्रैको मैलफॉय के जो दो दोस्तों में ट्रांसफॉर्म हुए थे। नाइस। ये बहुत बढ़िया बात लगी। Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. मैं ये बोल रहा था कि एक चीज़ बढ़िया ये लगी, इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो डाली हुई है इसमें। तो कोई भी बंदा जिसने मूवी ध्यान से देखी हो या हैरी पॉटर फैन हो उसे ये सब पता होगा। बस एक चीज़ की कमी यही है कि मूवी के कैरेक्टर्स कोई नहीं है गेम में। Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils.
मजाक बना रहा है ये Now, to determine which student gets बॉयल्स this. मुझे पता I नहीं haven't time एग्जैक्टली for any of you क्या at the moment. None. क्या None at all. disease है? Move aside. बट आई थिंक समथिंग फनी डिजीज Also टाइप heard का the हो सकता है headmaster approaching. ये इन्होंने बट सही नहीं किया हैरी पॉटर मूवीज में हर बार डम्बलडोर इतना Stand आइकॉनिक proud, purebloods. हेडमास्टर था The और इन्होंने future अपन is को ये yours. Professor Black. बेकार How are हेडमास्टर you, दे sir? दिया Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Greetings! Something is very wrong. ये रही प्रोफेसर कागावा Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Headmaster, I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. You call that a shine on those boots? Do better! Professor, ओह शिट I need to speak to you. ये पकड़ लेंगी शायद अपन को Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful.
Well, thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that. मुझे लगा वो पकड़ लेंगी. That ought to give Professor Fig some breathing room. Oh, ये रहा. Hard a worker as any house elf. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. लॉल मतलब बेसिकली तुम्हारा कैरेक्टर जो भी हाउस का होगा वो अपने फ्लैग्स लगा देगा. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. पता नहीं मुझे. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. बढ़िया. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Aloha Mora. ये वैसे फाइनल मिशन है क्या? यप, फाइंड प्रोफेसर. उसके बाद अगला सीजन आई गेस प्रोबेबली फाइनल बॉक्स स्टार्ट होगा उसके बाद, क्योंकि ट्रायल 4 मुझे लग रहा है लास्ट मिशन. ट्रायल 4 के बाद शायद हो सकते हैं 1 या 2 मिशन हो गेम में. ट्रायल 4 मतलब वन ऑफ द लास्ट मिशंस लग रहा है गेम का, क्योंकि उसके बाद तुम्हें एक्चुअली पता चल जाएगा कि पास्ट में हुआ क्या था ये एंशिएंट मैजिक यूजर्स के साथ. What are you up to now? भाई इसका ये ऊपर है, ये मुझे लेके किधर जा रहा है? बट एक्सेस द हेडमास्टर्स ऑफिस कहीं और से है क्या? मैं गलत जगह आया हूँ क्या? ऐसा लग रहा है एंट्रेंस कहीं और से है. डेफिनेटली वो जगह तो कैसल के एकदम ऊपर है. अच्छा इस तरफ था. बेसिकली हॉगवर्ट्स 2 विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ऐसे 2 विंग है. लेफ्ट राइट नहीं है शायद, वेस्ट एंड समथिंग ऐसा कुछ नाम है. तो वो दूसरे ऑपोजिट साइड में ही है.
क्लोज है अपन। ये वाला वहाँ पे जो फास्ट ट्रैवल था ना वो सेलेक्ट करना चाहिए था। यहाँ पे मैं आया हूँ, एक आधे बार आया हूँ इससे पहले Handy बस। resource indeed. Hello, Hamura. मैं बोला पता नहीं अगले बार यहाँ पे कब विजिट करेंगे, तो ये लॉक डोर वगैरह खोल के लूट ले लेते हैं। Revelio. आवाज क्या आ रही है टिंग टिंग करके? ऑपोजिट रूम वाली चीज ये हो रही है क्या डिटेक्ट? एक सेकेंड। Professor Hackett, as discussed, I have corresponded with my goblin acquaintance at Gringotts. All have condemned Ranrock's action, and some have privately considered that his motives may not be what they seem. From what I have heard of his treatment towards others of his own kind, those who refuse to join his ranks, I am inclined to agree with our friends at the bank. I will let you know what more I hear. Suffice it to say that for now, we must remain vigilant. Respectfully, Aesop Sharp. शार्प ने हैकेट को लिखा है, बट ये रूम किसका सवाल ये उठता है। प्रोफेसर शार्प और प्रोफेसर हैकेट, प्रोफेसर शार्प जिससे अपन अभी प्रोफेसर ब्लैक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सबसे पहले मिले थे पोशंस के बारे में, एंड प्रोफेसर हैकार्ट जो डार्क आर्ट्स वाली टीचर है, जो डार्क आर्ट्स के स्पेल सिखाती है वो टीचर। इस तरफ क्या है? ओह ये कैसे खुलता है? ये वाला दरवाज़ा अभी तक नहीं पता कैसे खुलता है। ऐसे दरवाजे एक दो और देखे मैंने हॉगवर्ट्स में। The gargoyle. That's where I need to speak the password. Lumos. Toujours pure. Oh, nice. Revelio. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Level 3 lock. यहाँ पे कुछ है। Revelio. I think बाजू वाले रूम में कुछ डिटेक्ट हो रहा है। Hello, Hamura. अभी तक अपने ट्रायल स्टार्ट नहीं किया, ट्रायल और लंबा रहेगा। एक सेकेंड, ट्रायल स्टार्ट करने से पहले एक बार ऊपर देख के आ जाते हैं। अरे यार क्या मजाक क्या है ये। अब लेवल 3 वाला चाहिए रहेगा। It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished.
Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio! रिसिप्ट, हेयर टॉनिक, मस्टैच वैक्स वगैरह वगैरह. अच्छा, आई थिंक हेडमास्टर की चीज़ है जो जो उसे चाहिए था सामान. That must be the pedestal. Oh shit! बुक के अंदर घुस गया. ऐसा एक सीन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने हैरी पॉटर मूवी में ही देखा है कि कोई दूसरे मैजिक फैंटेसी मूवी में देखा है कि बुक के अंदर सक हो रहा है. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? ये कुछ अलग है. Here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. ऐसा लग रहा है पेंसिल You ड्राइंग है. must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Make your way through the town without being seen. अच्छा, In क्लोक this यानी place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. डेथ से बचने के लिए अपन को अदृश्य चोगा चाहिए होगा. इनविजिबिलिटी क्लोक. नहीं, इसने वैंड से कर लिया. मुझे लगा अपन को इनविजिबिलिटी क्लोक मिलेगा. क्योंकि अपन पहले वैंड यूज नहीं कर पा रहे थे ना. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them.
इसको कैसे क्रॉस करूं मैं? वो तो उसी तरफ देख रहा है। जैसे ये कुछ अलग चीज़ है। इससे पहले कोई भी ट्रायल में ये नहीं देखा मैंने। हर बार दो ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? हर बार ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में अपन कुछ आर्मर्ड वाले एनिमीज से लड़ते हैं, एंड उसके बाद एंड में एक बॉस आता है, फिर खत्म। बॉस भी वही I must cross this road as fast as I can. बॉस भी वही आर्मर्ड वाला ही होता है। That's where I need to go, but I need to find a way past them. तो ये अपने आप चले जाता है लॉल। अपन को बस वेट करना था थोड़ी देर। Nothing this way. No danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Now's my chance. That's the way forward. Yeah, I guess ये अदृश्य जो है। Yep. Curious me. I think I'm invisible. जो अपना स्पेल है ना वो उतना इनविजिबल नहीं करता है। जब अपन एनिमीज के पास होते हैं वो अपन को देख सकते हैं। They can't see me at all. I can get closer to them. बट ये वाला एकदम खतरनाक चीज़ है। ये वही है जो हैरी पॉटर मूवीज में था। मुझे ऐसा लग रहा है ये डेडली हेलोस के 3 गिफ्ट के बारे में रिलेटेड है क्या? ये ट्रायल थोड़ा सा पता नहीं, लेकिन एक गिफ्ट तो है। डेडली हेलोस के जो 3 गिफ्ट थे, डेडली हेलोस के जो 3 गिफ्ट थे उनमें से एक ही अदृश्य चौका था। बच्चों के दोनों पता नहीं ये गेम में है कि नहीं कहीं पे। एक्चुअली अपन ने एक्चुअल अदृश्य चौका नहीं पहना। मुझे लग रहा है ये अपने माइंड के अंदर हो रहा है या फिर कुछ दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड जैसा कुछ डिजाइन किया उसने प्रोफेसर ने। run death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Elder Wand. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Yep, ये डेडली हेलोस के तीनों गिफ्ट के बारे में। That's really cool. अपन ने अदृश्य चौका यूज किया। Now we have the Elder Wand. I've never felt such power. अच्छा यही स्पेल्स है क्या? ये 4 स्पेल्स है बस। Descender!
Bombarder. Defender. ये कितने जल्दी रिफिल हो रहा है, तुमने देखा? स्पेल्स का कूलडाउन टाइमर ही नहीं है। आई थिंक यही ट्रायल है जो अपन कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा वो आर्मर्ड वाले एनिमीज इस बार रहेंगे। देखते हैं। ओह, एक्चुअल डेथ आ गया। Why? Bombarder. Potato. Stupid. Bombarder. Descendo. Stupid. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. ये कैसे बच गया? ओके, ही इज डेड। भाग गया डेथ। आई थिंक अभी अपन को शायद फिलोसोफर स्टोन मिलेगा क्योंकि वही एक बचा है।
3 डेडली हेलोस के डेथ के जो 3 गिफ्ट थे उनमें से एक देखते हैं। बट फिलोसोफर स्टोन को कैसे यूज़ करेंगे? अदृश्य चोगा का तो पता है स्टेल्थ है, ये अपन वॉन्ड अपन ने लड़ाई में यूज़ कर लिया। देखते हैं क्या होता है, शायद फिलोसोफर स्टोन हो सकता ना हो। A simple stone. है This must be for me. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. I can't believe she's dead. She's gone. Oh, poor Neve. We won't be the same without her. अपन रिवाइव करेंगे इससे। You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. यही था ट्रायल, क्योंकि वो देखो सामने मेमोरीज दिख रही है। But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. ये एक सही चीज़ थी। मैंने पिछले बार सेकंड ट्रायल जब किया था ना, तब कंप्लेंट किया था कि ये ट्रायल्स टोटल 4 ही है गेम में, इतने इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, तो ये सिमिलर क्यों है? तो ये एक्चुअली कुछ डिफरेंट निकला थर्ड वाला, एंड आई गेस फोर्थ वाला कुछ अलग होना चाहिए तो मज़ा आएगा। Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. इसेडोरा को ये ऐसे डार्क पार्ट की तरफ जाएंगी, वो तो अपन को पता ही था, स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था जब उसने बताया था ना कि वो
लोगों के पेन को अपना एंशियंट मैजिक यूज़ करके रिट्रैक्ट करना चाहती है। एंड वो जो पेन से जो मैजिक वो निकाल रही है ना, पेन एंड हेट से, वो रेड कलर वाला मैजिक, वही मैजिक आई गेस उन्होंने सिल्वर गॉब्लिन सिल्वर में कैद कर रखा था। एंड वही चीज़ अभी ये रैनरॉक ढूंढ के निकाल रहा है। एंड आई गेस वो मैजिक वो बिना वॉन्ड के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रैनरॉक के हाथ में कोई वॉन्ड वगैरह नहीं था। आई गेस अपन मैप रूम में जाएंगे अभी सीधा, देखते हैं। मुझे वही लग रहा, क्योंकि एक फाइनल प्रोफेसर बचा होगा अभी आना। 4 पोर्ट्रेल्स थे ना उधर। Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. So I guess Isadora, मुझे वो भी समझ में है कि वो इनहेल भी कर रही है, मतलब अब्जॉर्ब कर रही है उस इमोशन को, बट उन्होंने स्टोर किया होगा, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टोर किया होगा। हो सकता है इन चारों ने मिलकर इसाडोरा को हराया हो, एंड फिर उसके अंदर से वो जो भी पावर्स आए थे उसको इन्होंने गॉब्लिन सिल्वर में कैद कर रखा हो, जो भी रैनरॉक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ में भी हो सकता है, उनको फाइनल ट्रायल के बाद पता चले। देखते हैं। I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. अच्छा, उसको विस्की पिला के बहका के रखा इसने ब्लैक को। The Hallowed Hero Achievement unlocked. So अब क्या? I guess अपन को दूसरे क्वेस्ट आने वाले हैं। Probably जो बचे हुए लोग हैं उनके फाइनल क्वेस्ट आना स्टार्ट हो गए। सेबेस्टियन, नैटी एंड फिर पॉपी, इन सब के लास्ट क्वेस्ट आना चालू होंगे, क्योंकि फाइनल ट्रायल है ना नेक्स्ट वाला, मुझे वही लग रहा है। काम करते हैं अपन, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में टेलीपोर्ट मारते हैं। बट क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, तो फिर विंटर लास्ट क्लाइमेट ही है क्या?
पोचर कोट, उसका लेवल कम है अपन ने जो पहना उससे, तो दिखने में बुरा नहीं है बट required Bombarda meet Sebastian along the coast. I received an owl from Sebastian. It seems, despite our earlier disagreement, he would like to resume our search for the final piece of the triptych. He apparently found a lead on its location and wants to meet along the coast to the southeast. Okay. Prepare for your owls. अच्छा, ये अपने फाइनल ट्रायल वाला नहीं है. आउल्स बेसिकली तुम्हारे फाइनल एग्जाम होते हैं जिसके बाद तुम 5th ईयर से बेसिकली 6th ईयर में जाओगे, तो उसमें 4 मिशंस है. आई गेस तुम 6th ईयर जाने के बाद शायद तुम्हारा फाइनल ट्रायल स्टार्ट होगा. सो बेसिकली ये ट्रायल तुम फटाफट नहीं कर रहे हो. हर ट्रायल के बाद अगर तुम नोटिस करते हो तो अभी तक हर पहले के 2 ट्रायल के बाद क्लाइमेट चेंज हुआ है, यानी कि अराउंड 3 to 4 मंथ्स का गैप पड़ा है हर एक ट्रायल के बीच में. उसके बाद क्या है, ये तो ओके, ये वाला अभी बंद वाले एरिया में, यहाँ पे अपन जा नहीं सकते. ये तो दूसरा मिशन है, ये दूसरा मिशन है. ये नया कुछ आया है, स्पीक विद डीक फिनिक्स राइजिंग. एक बार बात करके देखते हैं. मिशन प्रोबेबली अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, देखते हैं क्या होता है. लोकेशन देखते हैं कौन सा है. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. एक काम करते हैं, आई गेस ये फिनिक्स वाला मिशन आज के एपिसोड में करते हैं. एपिसोड थोड़ा सा लंबा खींचते हैं क्योंकि अगले एपिसोड में मैं सीधा मेन मिशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ. एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी जल्दी रैप अप भी करना है मुझे, क्योंकि दूसरे गेम्स भी डालने एक एक करके. मैं जैसे डेड स्पेस में ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठा हूँ, बट उसके साथ ही हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड एटॉमिक हार्ट्स के भी एपिसोड आ रहे हैं, तो तीनों मिक्सअप करके डाल के, लेकिन तब भी काफ़ी टाइम लगेगा सब कुछ रैप अप करने में. किधर ये? ओह, ये भी इनएक्सेसिबल एरिया में ही है. यहाँ पे अपन जाएंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं. मुझे देखना पड़ेगा. मुझे तो लग तो यही रहा है कि अपन कोई मेन मिशन पे ही ये एरिया पे जाएंगे. तो हाँ, ये मेन मिशन, सेबेस्टियन का मेन मिशन भी यहीं पे है. तो आई गेस मैंने यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस किया हो कि ये क्रॉस कैसे करना है ना. कुछ अंडरग्राउंड से पाथ कुछ है क्या, पता नहीं. एनीवेज अगले एपिसोड में करते हैं, यहीं पे रैप अप करते हैं. आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.